There are a lot of conflictual situations in the 20th century, in the 21st century, in which women have been victimized, in which women have been oppressed. So we have seen historically that rape, sexual as well as psychological, has been used as a weapon of war. We've seen that happening in Kashmir for the past 22 years now. In the devastated terrains of Kashmir Valley, women have remained the chief sufferers and victims. 2 decades of conflict in Kashmir have brought to focus the distressful account of crimes against her. The Kashmiri woman has certainly remained the victim of the most barbarous acts of violence and rape. Kunan Poshpara mass rape incident in 1991 in frontier district of Kupwara was perhaps the most high-profile gang rape during 2 decades of conflict. शीन पेमुत तकरीबन शनस 4 मीटर तम दो तो 10 बजे गो यह क्रेक डाउन कोरुख ऑपरेशन गामस नी गर कड़ित बह कोड़हस पान गर तम सात गर मे खानदारिन बे बच्चे लकट लकट तो जनाब यह फौज यम सात आव योर अस गो न पेशान तम सात कि मगर सुबह कोर पता यह पेशान यह पंजगाम पे आमुत यह फौज यम सात यह फौज आव न कम से कम आस मे किन 1.5 हाथ तुम शराब बोतल तुम नीक सारे मर्द नबर कड़ पे कर तमो ज्यादा अस कर क्रैक कर तो पे फाट तमो दरवाज तम सा होत पुरान मकान पे फाटो दरवाज तो पे गई ज्यादा वुचान पलव तम टित वुचान गा हसरत वन नबरम गामिक लूक तुम तुलान दपान ये कुछ गटकार गो वन पोशपर हिंद तितकूट पुशवार ये नबरम लूक आय अमो आया गाड़ी अमो तुझक सन थोत पान हेकन लायक कहें पान हेकान पकत नड़ जंग फटत रात कयामत कर्म तड़िस आबस मज शीनस मज मरचांगन भरमत जवान कड़ गरो मज तुम रट इंट्रागेशन सेंटरस मज बड़ कड़ तुम थक शनहदन पे घर मज थक सिर्फ मसरात दे अंदाज तो बे तहयात वुच तिम अंदाज चलियाव कि तमो कोता कर बेहाई आस रोजन ये जहन को नजर पे दपान सन तो वस मौत बेहतर सत आए लूटने सान खतर गो गटकार रात कोरुख दग मार ये कि जन कि मेन बायन पता सारे इंट्रागेशन रात थक नबर कन खड़ा मर्दन दितुक अस नश तारन अस दितुक तम नश तारन अस रचक जन बेन गामन लूक आय तमो तुजक तम जन सान माज बी तुजक तमो वातन तम 30 गान पे तुजक तो वातन तम क्रालपुर तिमन कोरुक मेडिकल टेस्ट तम पलव सह तम पलव खून पलव वह तथि थानस मज तो तिमन मेडिकल टेस्ट कोरुक रूद मे गरस लायक तो गर रूद अस लायक
Ask us one koruk, ask a koruk. Rotun day by side. Patra yuko. फौजस अगर करन ओस अगर कि मिलिटेंट आसान सानो गरो मज अगर करहन तेल कसूरवार अगर बेकसूर कोरुक कि यह हशर कोरुक बेहरमती सान माजन बेनन सतन येल कि जन मी खानदारी अत मन शिकार गई पत सुबह गोस बह गर तत वुच मे तूफान वुथमुत यह गन दितान त्रुस पोहस पत्थर गन के त्रुस सत लोग मे पे जख्म पे मे खून गो जारी नहर दित कड़ बह तमो मिलिट्री वालन नश नबर यम चोट आमत तम वक्त नम गई जख्म नम गई टेब मौजूद यम नड़न यम सात नम चोट आय नड़ गई त्रक अलग पे नम टेब आमत नड़न कम क्या कोर इंसाफ चोर जन ममच चोर जन जोर जन वह जिंदे तमन इलाज लगान रतस तमन लगभग 10,000 8,000 4,000 रुपये लगान माज बीन तम यम इमी अजार ये गामस मज जरीफा सह मई इमी अजार ब्लीडिंग रूज तस चलवनी तमिस रोज 5 कोर यतीम 5 बच्चन हूं पालन कोर नस नोसुक बोय तो नोसुक कह सह गई इमी अजार कचा माज बीन यथ मज 3 जन वनस यूट्रस रिमूव कर जूना रफीका सारा मे गई जाती मे सत मे गई वो जन हिसाब यल तम दह पे क्या तम दह पे बजन गई मे खराब रेतस लगान 8,000 10,000 रेतस मे यह कंटिन्यू लगान मे येड़ सेट सटित दोल सटित मे ना बना थोद वात खुदा सबन द्रुई ये मसल गो चूंकि सुबह वथ ये बाशूर नफर तुम वथ गई बर्रेटस नियरेस्ट पे 30 ग्राम बर्रेटर तुम गई तस नश तुम चोन फौज आज रात नान सान रात सेंटर मज बंद सान आज कर रेप DC योर आव SP आव कोर कमांडर आव योर तम सात दुत बयान पत आव डिविजनल कमिश्नर योर वजह थे बोला योर पत बनिया अत पत दित मतलब FIR सो FIR वनस यह मौजूद बार बार तूत मन यह बयान कर टल मे वसान मन शर्म वारिया कैंसो हेक शर्म सत वन कह अन तमो हेक यह कत ब्रोह वहित कह वनस बना सान बचन न सान कोड़न न कुन चीज न बना स्कूल गन न बना कह क्या लुक हंद और नबरम गाम हंद दिवान पाम दपान तुह गो तिम बचन सान तुम गो तिनी गाम ये गामस में मिलिट्री कोर इस कन यह कोर कर योड़ गुल गड़म सान कोर नीव बक कोर वन पे सन बच्चे स्कूल गल कि बाकी स्कूलों पाम दिख तुम तौर तुम ना पढ़ो नु कह गो न स्कूल कह लूख तत पाम दिवान ये स्कूल बाय स्कूल वन 3 गामस मज तत कर सन बच वापस दपान इन माजन सत गो इत पे मगर यह इंसाफ बहुत दपान इन जवान दियो तुम सजा क्या सजा वात यह गो यह बिल्कुल वुचन कि इन जवान लोग सजा कसूरवारन दियो सजा और अगर बे इंसाफ यी अमन माजन बेन यम ममद अमन सत कर इंसाफ तमन गई सजा बाज़ाब्त मिलन तमन गई तरन फिक्र गवर्नमेंटस गई तरन फिक्र पे मीन फौजन क्या बनोमुत तथ गामस मज इन कसूरवारन गई सजा मिलन अस ब्रोह किन ये पे सोन यह शक्ल सान कथ सान आवाज टीवीन खस मरकजन गई निबरम मुल्कन गई अस गो वुचन कह नत कह इंडिया गवर्नमेंट वनस वन है यह हसा गलत अत हसा आय 23वीं बात FIR दिन मगर हम मजबूर थे उस टाइम गवर्नर राज चल रहा था यहाँ पे हम दबाव में थे उस टाइम उस कमांडिंग अफसर को मेरे सामने लाओ जिसने उस टाइम मेरे को बंद रखा मेरे को इंट्रोगेशन किया जो पंजगाम से आया था उस टाइम हम इसको दहशतगर्दी मानते हैं क्यों हुआ हमारे साथ ही उमर अब्दुल्ला सह गोस सैनिस फैसलस इंसाफ कर कि हे अत गाम सर बह इंसाफ अमे माजन बेन सर बह इंसाफ अमे नौजवान सम गवर्नमेंट वो तो तारवई अगर ओन होम राइट्स गवर्नमेंट मान अगर वो गवर्नमेंट दिम 3 फैसल ये पे लिखित 3 फैसल तीन दिस इन जन फॉर सम टाइम रपी 2 लाख दोम तन से SP बन से नई से SP केसस तगी कत वन कर SP SP नई सर
इमन साने जख्मन हज गोस लागुन क्रोड़ miserable and shameful what happened in Kunan Poshpara. Never a Kashmiri can forget about it, and this was a result of this conflict. Recently, the government released a document in which it was showed that 2,500 cases of rapes and molestation were carried out by the security forces. It may be highest in the country, wherein armed forces, official forces have maltreated civilian women. There is a contradicting report of complainant and government. We have our own investigation staff, investigation being headed by IG of police. They are exclusively under the administrative control of this commission. We entrust those cases to them so that an independent enquiry is made in those cases, and they recommend the commission the factual position, whatever, and the commission decides those cases on the basis of the report of our investigation wing. Most unfortunate part of it is that still no action has been taken against it. They do say that the case is going on and we are looking at what happened, but does it take decades? Kunan Poshpara particularly I cannot comment on because I do not have the facts of the case, but as far as I can understand, there is obviously not much that has moved in that direction. The reopening of the Kunan Poshpara mass rape case. The incident took place 20 years ago in 1991. 30 women in the Kupwara area alleged that they were raped by army men during a cordon and search operation. We have recommended reopening of the case and reinvestigation of the case and action against the person who has that time closed the case. These were the recent recommendations of the commission, and we have already submitted it to the government. We will wait for the SHRC report to come, then we will see what has to be done about it. Paramilitary forces, they were responsible for this shameful act. Paramilitary forces, they cannot be prosecuted unless they have sanction for prosecution from central government. We have already, so many cases are pending. We have already recommended in so many cases for the sanction for prosecution of those, and state government has already forwarded to Home Ministry and Defence Ministry, Government of India. Whatever may be the FIR or the allegation, it must be borne out on the text of the evidence that is available. So I think that all these investigations will be seen in that particular light. There are spine-chilling catalogues of crimes committed against Kashmiri women, yet only few were brought into the limelight. One such case is that of Nilofer Jan and Asia of Shopian, which invited the attention of media. आसिया और नीलोफर चे बिल्कुल ये टाइमस पकान बाग पे वापस घर कुन और तम 4:30 गमित बागस मज और रातस ाड़ान रातस युथे सारी फैमिली छोड़ पुलिस गई प्रेथ कंस गई ाड़ान ाड़ान अस लब आसिया तो नीलोफर कुने और युस बिल्कुल क्यों कदल और कदल पे वसान गाड़ मज बोन सह दोशन दर मज त्रावान और सह युथे दर मज त्रावान तो अत मे कर सलाम योत और सह मे हावन होत पे दपान हो कि होतन कुछ शायद वुच मा चीन खानदारिन. For the first time, the whole society spoke against the violence which was committed on those two victims of Shopian.
3 इन्वेस्टिगेशन इसमें हुई। एक तो जान कमीशन की हुई, दूसरी इन्वेस्टिगेशन तो SIT की हुई। SIT का इन्वेस्टिगेशन ओवर हुआ ही नहीं था तो CBI को लाया गया था। SIT का कोई कंक्लूजन तो पता चलता ना उन्होंने क्या किया। मे बी SIT वॉज गोइंग इन राइट डायरेक्शन, सो स्टेट इज अफ्रेड, शायद जो इसमें इन्वॉल्व है मे बी आर्मी, मे बी CRPF, मे बी SOG, और ये सारे लोग बाहर निकल आएंगे तो इसलिए उन्होंने बोला चलो CBI आएगी, इसकी पॉलिश अच्छी तरह से करेगी। Statements given by the officials were totally incorrect. Case was handed over to CBI. They came up with an investigation where they proved that the women had died due to drowning. ये आबस मज दोपुक यथ मज हज फसन 24 वरिश तो 18 वरिश बच्ची हज फचि ये आबस मज तिम हज गसन यथ आबस मज यर। Two bodies were exhumed. It was found that the lungs were intact in the dead bodies. And when the lungs were examined, they found that there was mud and dust inside the lungs. Now that can only take place that if a person is alive when he's gone inside the water. So they would tend to breathe in that water. So when they breathe in the water, then the dust and the mud that is in the water would be carried into the lungs. That's a very clear evidence as to that the women died due to drowning and for no other reason. What they say, that is impossible. It was not a drowning case. It was really a case of murder and rape. जैसे उनको खाली असाइनमेंट इतना था कि आपको इसमें हमारे फोर्सेस जो यहाँ पे हेल्म ऑफ अफेयर्स कॉन्फ्लिक्ट जोन है उनको पहले इसमें से exclude करना है. As far as the allegations of rape was concerned, the younger girl who was killed, who died due to drowning, when they exhumed her body, they found that the vagina was intact, and in the vagina the hymen was intact. So she had not even had any kind of physical contact with anybody. Samples sent to the CBI were not the correct ones. They were changed samples. The results were not also correct. So these things happening against women shows the amount of violence which is being conflicted against women here. यीत इन्वेस्टिगेशन आए और अस मिलो वन इंसाफ कहें ते. The case is still pending before division bench of this honorable commission, and we have sought those reports, and this will be finally disposed of. It is an irony in a democracy like India that 2 women were raped, molested and killed later on, but nobody takes the responsibility. The tragedies of Asia and Nilofer attracted media attention. Others simply faded in oblivion. There are legions of stories that were left hanging mid-air. One such case is that of Ashmal. Family of the deceased accused Rashtriya Rifles of committing this heinous crime. Unable to bear the pain of humiliation, she died of cardiac arrest on the way to hospital. वो अप्रैल 2002 बटवार स्कूल पे आयस ये क्यों बात कोर असल पे प्यार व्यार कर क्या द्राय तो वो तौर तो तत घास लोनन लोग लोनन तो बस तति बिहित बस लकटे तति बिहित तो क्या लोनन मेन मोज अथि लोनन और क्या आर्मी वो कर सरसी बागस घेर अंदे तो बह क्या बह खूचस बह चजस तो अमिस क्या बह चजस बोजस लबड़े बोन कुन मे दिस नजर अमिस कोर घेर पत पत किन अम लाज क्रैक दिन खतरनाक क्रैक और आई और नफर वपलवन कि मे दोपुक ज वादन मे दोपुक घास लोनन तो और अतन मे मोज तो तमिस कोर घेर अंदे बह चजस बह खूचस पत क्या खत तम तथ सत खत तो मगर हम आर्मी तम द्रमित ततन हस पेमस तथि तमिस पलव वलव ट पता करा मान FIR वफायर करा लाज की मगर अस लकट अस कोर न सपोर्ट अत मज कहन सपोर्ट कोर मज मोलिस तमिस न पाई कह मोज मजूर वजूर कर वातन कोर वाजन नख मजूर कर सो लकट बेस हालत सही खराब तस लड़कन पर डे शाम निवन तो हेवन पोस पे
STF. तत पे गो हार्ट मे हार्टस वो दूर वन शोरस मज रोजन ये बे हार्टस दुब्राय ह्यूमन राइट्स वाले वन कश्मीर मान क्या कागज पे लिखित बयान पुलिस ऑलरेडी दिवान CID बयान लकट बच्चे अमिस सत अत गई FIR आको इत मान अत कर कहन हल मगर अत ग गवाह गोत अगर FIR तेल वो केस बराबर लगभग 3 वरी लड़ान केस. No matter whose blood spills and in which part of the world it spills, loss of life is irreparable. Violence in all its manifestations is highly condemnable. Ironically, the gruesome murder of 2 teenage sisters by gunman in Sopore on January 31st evoked belated yet subtle condemnation. The cold-blooded killings of 2 young girls, allegedly by militant gunmen, was a cowardly act and purely inhuman in nature. Many such crimes committed by gunmen go unnoticed and uncondemned. It's a human rights violation and we should condemn it. Everybody should condemn it. And I think we have already taken cognizance of that case. There were 2 people who were identified. One fellow's name was Wasim Ganai and the other was Muzaffar Naik, who is popularly known as Muz Maulvi. Now Wasim Ganai was killed in an encounter subsequently and we are looking for Muzaffar Naik. The minute we get him, either we'll arrest him or if there is an encounter, then you know the consequences will be. When Maimuna's husband fell to the misfortune of enforced and involuntary disappearances, she became the sole breadwinner of the family. मे गई खानदारस 14 वरी लापता द्राव गाड़ी तो और आने की फातियस द्राव सो दिलियोस दोस मोरमुत Patron me panu gar borde. Patron me bugai somos nós para minha mieti. Me chuvate. Eu me passunha bem cogne mas te cota chegação. Nada me bugai para minha mala. मे द्राव गाड़ी और पाई क्या कोरस कुछ वर्दात कोरस आती पुलिसा कोरसा क्या कोरसा अच्छे वनो तुम वो कब्र अस मे मूदम आज दी तम पान नफर हमारी मांग पूरी करो हमारी मांग पूरी करो लापता बच्चों को पेश करो लापता बच्चों को पेश करो हमारी मांग पूरी करो हमारी मांग पूरी करो. Half widow. This is a term which has evolved in J&K itself. That it is that we have thousands of cases of disappearances who don't know whether their husbands are living or they are dead. They cannot remarry. So the clergy has to come in. They have to give the fatwa that what these half widows have to do.